يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة اقتباس، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم للتاسع علامة اقتباس. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। जब रसूल अल्लाह ने यौम अशूरा का रोज़ा रखा और उसका रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, यही दिन है जिसकी यहूद व नसार तज़ीम करते हैं। इस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब आइंदा साल होगा तो अगर अल्लाह ने चाहा हम नवीं दिन का रोज़ा रखेंगे। कहा, इसके बाद आइंदा साल नहीं आया कि रसूल अल्लाह वफ़ात पा गए। When the Messenger of Allah fasted on the day of Ashura and commanded that it should be observed as a fast, they, his companions, said to him, Messenger of Allah, it is a day which the Jews and Christians hold in high esteem. Thereupon the Messenger of Allah said, when the next year comes, God willing, we would observe fast on the 9th. But the Messenger of Allah died before the advent of the next year.